Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So taking up the next set of important topics from 18th of November. So Nigeria honors Prime Minister Modi with their second highest national award, which is known as the Grand Commander of the Order of the Niger. So we know that Prime Minister is on a visit to attend the G20 summit. So he'll be, which is being hosted by Brazil. So on that basis, he is visiting Nigeria also. So, what are the areas where we'll be seeing more focus and more strengthening of our strategic relationship? So, this is going to be terrorism, piracy, and drug trafficking. So, the defense and security aspect is being highlighted. And apart from this, when we look at the other areas, like we'll be going with the joint operations or the military exercises in the Gulf of Guinea. So geographical location and map becomes important for us. And apart from this, other security areas can be cyber threats. So this is regarding defense security in terms of energy. We can say the International Solar Alliance is going to be another focus area and even investments. So there are 135 Indian companies which have invested and which are still investing in Nigeria, which includes Airtel, Tata Group in like different sectors of telecom, manufacturing, and agriculture. So investments stand at $20 billion. Then in multilateral cooperation, there are different forums like United Nations. India Africa Forum is very crucial. G77 and WTO. So these are some areas where India and Nigeria they have their presence. In terms of trade, $15 billion is a trade between India and Nigeria, and Nigeria is India's largest trading partner in Africa. So key areas of imports from Nigeria, it includes crude oil. So energy is very important. Crude oil is constitutes somewhere 12 to 14%, and then LNG also, natural gas. And in terms of India's exports, pharmaceuticals, textiles, automobiles are the major areas. And we are also seeing, given pharmaceuticals, there is rise of medical tourism also from Nigeria. In terms of historical ties, we see that Nigeria has been part of NAM during the Cold War, and we also share common colonial experience. So other areas of interest can include digital technology, startups, and you've seen renewable energy can be more focused. And Indian diaspora's role is also important, which stands at 60,000 Indian expatriate community, which is a key pillar of the relations. Now, air pollution, and specifically here we have articles focusing upon Delhi. So this particular article is talking about that according to the writer, he believed that national pride is very important, and the areas which affect or which drive nationalism, there we see political will helping us in giving us a solution and dealing with that problem. But in case of air pollution, this has not happened. So you have like written cited certain examples. For example, when we look at the vaccine development during COVID-19 period, or when we are seeing that there is for example, a living organ like beating heart is transferred from Chennai to Bengaluru within 2 hours. So it is reflecting that national pride. But what happens when that sense of shame related to bad air pollution that hasn't worked in case of dealing with the Delhi's air pollution? So different factors are mentioned over here, like stubble burning, western disturbances. So natural and anthropogenic factors are the reason behind this. And also we see like the air pollution is not a major electoral issue also in Delhi. So that is casting like serious questions on the seriousness and the priority of this issue and the political will. So we need serious political will and great bureaucratic talent here in person of high integrity to resolve this. And another example is, for example, uh,
as we say, one man army or single man army. So the Delhi Metro Man E. Sridharan, he's been cited as an example. So we need some personalities and experts in dealing with air pollution. So severe and severe plus air forecast for the next 6 days. So here the institutional stakeholders, Indian Institute of Tropical Meteorology, IMD, NEERI, all these are important. And then CPCB, Central Pollution Control Board. So they state that 24 average of PM 2.5 levels crossed 300 micrograms per cubic meter. And this is 5 times the national prescribed standard, and it is like very dangerous for even healthy people also. Forget about the elderly and the children. So GRAP 4 comes into implementation. So the provisions under it have been clearly mentioned. So it is stating schools will be closed down, private offices, work from home, then trucks will not be allowed entry into Delhi. But it is not directly hitting onto the cause of the air pollution. These are secondary measures, and that too short-term measures. So what are you smoking? Here you can see that mostly it is close to 500 level. The AQI is close to 500 level. So citizen charter and advisory to citizens in terms of awareness is also another area through which we can, again, in short term, we can deal with this. So community participation, political will, bureaucratic support is very important over here. Long-term measures and having a proper plan is important. So you can see that again it is being cited here कि जो stubble burning है, it is seen that farmers जो हैं, they are tricking the satellites by switching time. So it is noticed that farmers are burning the stubble mostly after the afternoon. It's post that time period to again skip maybe the tracking by the satellites. But again, there is one satellite which crosses India every 10, like it is providing continuous coverage every 10 minutes to us. So on that basis, it confirms that there is spike in farm fires during late afternoon hours. And combined with the westerly disturbances, we see that the smog is brought towards the Delhi. So that is one thing, and temperature inversion is another natural factor which leads to these smoggy conditions. Now, another solution here is talking in regarding the industries. So it is how NCR can cut the SO2 emissions, the sulfur dioxide emissions from 12 thermal plants which are there by 67%. So it is with the installation of flue gas desulfurization, we can curb it by 67%. And India is world's largest SO2 emitter, responsible for 20% of global anthropogenic SO2 emissions. So even in other areas where we have seen the installation of the flue gas desulfurization plants, positive results on a larger scale has been witnessed. So Center for Research on Energy and Clean Air, Central Electricity Authority. So we need again timely updates. We need again data updated on transparent basis so that accountability is also upheld. And few facts here includes like once SO2 it is released, it quickly transforms into sulfates and secondary particles that are major components of PM 2.5. So PM 2.5 is more dangerous than PM 10 because it can enter our bloodstream also. These secondary particles, they have a longer lifetime and they possess serious health risk. So paddy straw burning, it also causes seasonal spikes, thermal power plants. These are some of the major reasons. And also like other components or the greenhouse gases are the carbon dioxide, carbon monoxide, methane, and whose quantity is higher than SO2. Then coming to the COP29 and the results so far, the discussions. So discussing on that, we see that India
has expressed frustration with the developed countries for not seriously discussing supporting climate action in with the developing countries. So no progress so far on climate finance, and there is this mitigation work program which has to be implemented, and it lacks implementation or again the global support and the global will on this. And so this has to be recognized when you're talking about common but differentiated responsibilities. And COP27, this mitigation work program was created at COP27, which held at Sharm el Sheikh, Egypt. So how can we discuss climate action when it is being made impossible for us to act? Even as our challenges in dealing with the impacts of climate change are increasing, we are seeing impacts are increasing, but still there is lack of common agreement or common political will over this major issue, which is again a global issue. It is a borderless issue. So moving ahead with the same thing, we this is now focusing upon major challenge in the form of Donald Trump coming back to power and the president of United States of America. So he calls climate change as a hoax. So you can just understand from this one word only that what is the understanding and what is his stand. So we need coordinated, robust response. There is then disinformation, misinformation, which is being spread over this. And then people, they lose connect. And also like there's the targets when we talk about other data, 43% reduction is needed for the 1.5 degrees Celsius target, which was set under the Paris Agreement 2015. And then NDCs are also a component under the Paris Agreement. So even if we go ahead with the full implementation of all the nationally determined contributions, still we are heading towards a temperature increase of up to 2.8 degrees Celsius of warning. So this showcases the relevance of NDCs and the impact that it can have, because even things are evolving, we are not in tandem, or the world or the globe is not in tandem with the measures being taken and their effective implementation. Then this article is questioning the former CGI's tenure and how he could have taken more measures to restore faith in the courts. So saying this restore faith in the courts would be, again, I would not support this, because India's judiciary is again one of the strongest judiciary in the world. And we often talk about again the independence and the integrated judicial system that we have. So this is not of so importance for us. Now, this article is important from the perspective of healthcare or One Health approach and universal healthcare and rising challenge of the non-communicable diseases, which is, we can say, is a silent pandemic also. So one target of WHO regarding diabetes is 80% of the people with diabetes, they are diagnosed by 2030. 80% of people with diagnosed diabetes, they have good control of glycemia. So this is the WHO's target for diabetes. And the diabetes burden, again, it is 133 million people are remaining undiagnosed in India. And further, that is adding up also. So be it again related to tobacco consumption, cigarettes and smoking, or we see the people, they develop 30 to 40% or them who develop diabetes, and compared with those who do not smoke. So nicotine or that needs to be curbed. So electric cigarettes, maybe see e-cigarettes, may nicotine is used. So it impairs the function amount of insulin that is being produced by beta cells. So it affects the insulin production. And NCD risk factor collaboration with the support from World Health Organization includes people who are fasting the plasma glucose.
और जो glycated hemoglobin है, which is HbA1c, these are elevated. So even we globally, if we look at the number, it has quadrupled globally to over 800 million people in 2022, with global diabetes prevalence in adults also increasing to 14%. The Lancet report is very important here, and India has the highest number of people with diabetes as against China's prevalence of only 142 million. In India, it is 212 million people. So behavioral aspect, lifestyle changes, and then doing physical exercises every day is very important. Regulation of food processing industry is important. Having again nutritional standards, um, again on the backside, is very important. So all of this becomes very important. So major solution would be again the behavioral aspect. Then democracy by force. So in this case, we're talking about Supreme Court's recent verdict on the bulldozer action, or as it is stated, the bulldozer justice or quick justice. So the use of strong arm tactics by the institutions. So how it has impacted the democratic governance. So this article is taking it beyond. It is interpreting bulldozer justice or the bulldozer idea behind that as a metaphor here. So it is stating that again, Supreme Court's verdict stating that it states complete lawlessness. You need to follow proper procedure to serve the due justice in case of even like if something wrong is happening. So still proper procedure, due process needs to be followed. That is one element. So here it is stating, for example, what are other areas where we see this form of ideas being formulated in the governance. First is that it contaminates our idea about the democracy, like the idea that democracy is only about the majority. So ये भी एक तरीके का बुलडोजर थिंकिंग है. Then using जो हमारी conceptual and ideological bulldozers consist of statutism that believes in prioritizing the supposed interest of the state over those of citizens. So that's how it is interpreting. So we can think about again criminalization of politics. That is also a form of bulldozer justice, or the idea behind that. Apart from this, we can talk about the use of black money in the electoral funding. That is also the thing. So it is stating using legislation as a bulldozer, governments can do much more damage than by the use of physical bulldozers. So again, here, that is why we talk about the importance of the doctrine of separation of powers. And that needs to be, again, that is actually being followed also. So that is why it becomes important for the overall democratic functioning and upholding the constitutional morality. Moving ahead with the same topic, so इसको विजिलेंटे जस्टिस भी बोला जा रहा है, which violates again basic principles of rule. जो है separation of powers is violated, turn the executive into judge, jury and executive. So that is why violation of the doctrine of separation of power, that instant justice by the executive, by the incumbent government. So here again issues ki we started कि इट बिगेन इन द वेक ऑफ जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप प्रोटेस्ट, that has multiplied across the country. At that point of time, this somewhere emerged, this trend or the idea, and it is only the courts that should choose to act and not the executive. Also, it raises questions about redressal and compensation of all the past acts also, which are now stated to be illegal. So it is talking about the meaningful fundamental right to shelter and protection from the evictions, because it is a fundamental right under Article 19 of the Constitution. And also it impacts the family as well, the children. So एक तरीके से collective punishment हो जाता है. So transparency and due process needs to be followed. जो अभी बात करी proportionality की यहाँ बात की जा रही है, which has been introduced here. So it requires जो municipal office है, they need to, now they are being held accountable, or they will be held accountable in
order to, if such actions are taken, they will explain in writing why this extreme step of demolition was taken, and इसके अलावा क्या और कोई option नहीं था. So court gave the teeth as well by holding that जो cases हुए illegal demolitions के, erring officers, they would be personally liable for the actions. एंड ऑल्सो यहाँ पे एक्सेप्शन की बात की जा रही है कि अगर सपोज डिमोलिशंस हो रही है इन केस ऑफ स्लम्स है या इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं, सो उनको एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम दिस जजमेंट. बट आई वुड से अगेन वो सबसे मोस्ट वल्नरेबल और मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, तो दे ऑल्सो रिक्वायर प्रॉपर प्रोटेक्शन. दे ऑल्सो हैव द राइट टू रिहैबिलिटेशन. दे ऑल्सो हैव द राइट टू शेल्टर. सो व्हाई द एक्सेप्शन फॉर देम? इवन दे रिक्वायर प्रोटेक्शन. सो वहां पे भी ड्यू प्रोसेस और प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए. If they are vulnerable or if they are living in slums, which is again informal or illegal, which is not authorized, but still there also protection of rights and constitutionalism needs to be followed. So Purvi Prahar joint exercise hui of our defense forces. So this reflects the integrated joint operations in challenging mountainous terrain of the region. This was held in Arunachal Pradesh. Now, the Kerala IS officers has been suspended. Why? The reason is again, सबसे important चीज यही है कि anonymity is very, very important in terms of civil services or bureaucracy. So, Code of Conduct Rules 1968 is being seen to be violated because they created religion-based WhatsApp group. So that's how, again, and further derogatory statements were also issued. So that is the main reason behind their suspension. So we need high standards of ethics. Bureaucracy needs to maintain them. Honesty होनी चाहिए, political neutrality होनी चाहिए, accountability, transparency. Anonymity is very, very important. We see social media का use increase हो रहा है, but that also needs to be positively leveraged कि आप पब्लिसिटी प्रोवाइड कर सकते हो. जो बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज हैं, आप उसके लिए उसको यूज करो. पर्सनल उसके लिए क्यों यूज कर रहे हो, या फिर टू showcase that you are an IS officer or to again show your position of power. So supremacy of constitutional values needs to be upheld. Andaman and Nicobar Islands, we aim to make them as a tuna export hub. So fisheries sector, Matsya Sampada Yojana is there. So particularly it is talking the context of tuna export hub. So we see for example, we see that the market is somewhere close to $42 billion. Indian Ocean is considered second largest tuna region. So India का share is somewhere 21% of the world's tuna. So MPD का role important है Marine Products Export Development Authority, particularly exports के context में. So we can provide them with more like access to modern fishing technologies provide कर सकते हैं. Inadequate जो fish processing और या storage facilities है वो available होनी चाहिए. जहाँ पे infrastructure lacking है, that needs to be again invested for. So apart from this, increased market access can be another area. So more networking can help them in terms of capacity development, and also which is very important for their livelihood also. So this can be promoted, such types of export hubs, depending upon the local uh, species of fishes available across different regions. कल हमने देखा था कि again मत्स्य उत्सव होने वाला है अलवर में, तो there also the same ideology can be followed, और बाकी coastal states में भी such export hubs can be created. So यहाँ पे कुछ important facts हैं regarding again CO2. So it is why it has contributed the most to the global warming, ये question होता है. So greenhouse gas effect की पहले बात हो रही है.
सो वी सी दैट अर्थ एटमॉस्फेयर जो है इट ट्रैप्स द हीट, इसलिए हम हीट बजट की भी बात करते हैं। तो सन जो है इट एमिट्स शॉर्ट वेव रेडिएशंस और द सनलाइट, इसी बेसिस पे सर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन था। तो इनकमिंग रेडिएशंस और जो इंसोलेशन होता है दैट कंप्राइजेस ऑफ द शॉर्ट वेव रेडिएशन, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है दे आर द लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो एक ये फैक्ट है। एंड CO2 प्लेड मेजर रोल, तो इसको अगेन रेडिएटिव फोर्स या हीटिंग इफेक्ट बोला जा रहा है। तो 3 डिफरेंट क्लाइमेट ड्राइवर्स है विच आर आइडेंटिफाइड: ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस, एरोसोल्स, और जो लैंड यूज चेंज हो रहा है। सो हेयर वी सी जो मीथेन की हम बात करते हैं दैट इज 80 टाइम्स मोर पावरफुल देन CO2, बट फिर भी अभी हम यहाँ बात करें कि CO2 ही क्यों लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है टू ग्लोबल वार्मिंग। या इवन जब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs की बात करते हैं तो दे आर 1000 टाइम्स मोर पावरफुल देन CO2, बट दे हैड लेस हीटिंग इफेक्ट देन CO2। ऐसा क्यों है? क्योंकि वी सी दैट जो टाइम पीरियड है कुछ इसमें शॉर्ट टर्म है, कुछ इसमें लॉन्ग टर्म है। फॉर एग्जांपल जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर में लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए रहता है कंपेयर टू अदर ग्रीन हाउस गैसेस। एंड when a pulse of CO2 is emitted into the atmosphere, 40% will remain in the atmosphere for 100 years. 20% जो है it will reside for another 1000 years. So that is why CO2 is the major culprit here we can say। और जो बाकी polluters या pollutants है, water vapor भी है, it is the most abundant greenhouse gas in the atmosphere, बट उसकी शॉर्ट साइकिल है 10 days ऑन एन एवरेज, दैट इज वाई ऑल्सो उसका इतना ज्यादा एम्पलीफाइंग इफेक्ट नहीं होता है। Then ASFA in the Imphal Valley, Manipur mein we are seeing that again ASFA, Armed Forces Special Powers Act has been reimposed. Question ये है कि using again ASFA या आर्मी को फ्री हैंड देना, क्या ये हमें हेल्प करेगा इन रिजॉल्विंग जो सिचुएशन है? सो पहले यहाँ स्पेसिफिकली आस्फा की बात हो रही है, तो इट अगेन ट्रेसेस इट रूट्स टू कॉलोनियल टाइम पीरियड, और सबसे पहली बार इट वाज अगेन यूज्ड इन रिस्पॉन्स टू द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, and then this was again retained in the independent India also। So उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में यूज हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, पंजाब में ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ मिलिटेंसी जो खालिस्तानी मूवमेंट राइज था, देन नागालैंड, असम, मणिपुर। तो नॉर्थ ईस्ट में मोस्ट ऑफन स्टेट्स में इट इज बीन इम्प्लीमेंटेड। सो जो इस पे अगेन फ्री हैंड टू द मिलिट्री है कि पर्सनल ब्लैंकेट इम्यूनिटी हो जाती है फॉर द मिलिट्री पर्सनल्स फॉर अ रेंज ऑफ एक्शंस। लाइक मिलिट्री के पास पावर है टू ओपन फायर इवन इफ इट कैन कॉज डेथ। It gives them the power to arrest the individuals merely on the basis of reasonable suspicion। Suspicion के basis पे ही without any evidence or anything, they have the power to arrest the individual, search the premises also without warrant, and there can be no legal proceedings against the armed forces personnel for their actions without prior approval from the center। और सेंटर ही इसको इम्पोज कर सकता है या फिर गवर्नर ऑफ द स्टेट, एंड once the area is declared to be disturbed area। सो नागा मूवमेंट सी हमने देखी, नागा नेशनल काउंसिल का राइज हुआ विच इज अगेन जो सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज थी दे वर ड्रिवन बाय NNC इन नागालैंड। देन मिजोरम में वी सॉ मिजो इंसर्जेंट मूवमेंट हुई। सो जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैलो मैसेकर 2000 में हुआ, किलिंग एलिज्ड रेप ऑफ अगेन दिस पर्सनालिटी लेड टू subsequent removal of Imphal municipal area। Then this is very important, Irom Sharmila, a Manipuri activist 2000 से she began her protest कि आसवा रिमूव होना चाहिए। एंड फेक इनकाउंटर्स बोले जाते हैं, फेक इनकाउंटर्स होते हैं, बट जो कंप्लीट ब्लैंकेट पावर है टू द मिलिट्री पर्सनल्स दैट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। एंड एफिकेसी ऑफ आसपा पे देखना चाहिए कि हाउ मच इट हैज हेल्प्ड, टू व्हाट एक्सटेंट इट हैज हेल्प्ड इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग और मेंटेनिंग पीस इन द different states where it was or it has been implemented against the insurgent movement। सो यही है कि वी नीड कंपीटिंग पॉलिटिकल डिमांड्स अब राइज हो रही है, मणिपुर की हम स्पेसिफिकली बात हो रही है, एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। सो वी नीड अगेन, जब तक कि अगेन अल्टीमेटली बात नहीं होगी ऑफ डिफरेंट पार्टीज व्हाट आर द इश्यूज, क्या स्टेप्स ले जा सकते हैं फॉर रेजोल्यूशन, अग्रीमेंट नहीं होगा, until then the things are not going to fall back into place। So arrival of Pakistani cargo ship Bangladesh में why it is a big deal। So firstly we see कि बांग्लादेश
is uh, asking for extradition of their former prime minister. So it is believed she is still there in India only. Sheikh Hasina की बात करें तो she was given shelter in New Delhi after her father also Sheikh Mujibur Rahman, who was assassinated 1975 में. So India played very important role जब इंडो बांग्लादेश वॉर की बात करते हैं in 1971, वो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर बोला जाता है. So post that और जो current regime था in Bangladesh that uh, had very strong relations with India. So be it again related to again the border security की बात हो या फिर insurgents की ही बात हो. So actions were being taken या even trade relations की भी हम बात करते हैं. तो यहाँ पे बात हो रही है कि आफ्टर शेख हसीना शी इज लेफ्ट द कंट्री. तो जो न्यू अभी इंटरिम गवर्नमेंट है अंडर मोहम्मद यूनुस, who won even again Nobel Prize for the Grameen Bank. तो now we see कि Pakistan is trying to again develop relations with Bangladesh. So जो इस्लामिस्ट जमात की बात करें तो now they opposed to the creation of Bangladesh, so collaborated with the Pakistan army. So now they are more active. So that is why we are seeing the even Pakistan is able to extend a hand of friendship to Bangladesh. Now world economies या वर्ल्ड इकोनॉमिक्स की हम बात करें, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीज. वाइल्ड पॉलिनेटर्स हैं, सो पॉलिनेशन के बेसिस पे दैट इज द फंडामेंटल प्रोसेस दैट इज रिलेटेड टू द यील्ड और द फूड प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन. सो वाइल्ड पॉलिनेटर्स इसको पैथोजन स्पिल ओवर भी बोला जाता है या स्पिल बैक इफेक्ट इज ऑल्सो स्टेटेड. बट यहाँ चैलेंजेस कि जो एक वायरस आउटब्रेक हुआ है इन द वाइल्ड बी स्पीशीज विच इज नेम्ड एज थाई स्कैब्रूड वायरस आउटब्रेक. इंडिया में भी हुआ इन तेलंगाना इन 2021. So that is impacting the honeybees and the again the activity or the process of pollination. So इसीलिए सबसे we can say कि it is being cited as dangerous. So threats to insect pollinators इसके अलावा और क्या है apart from diseases or virus outbreaks, pesticides है, pollution, climate change is there. तो more than 75% जो food crops हैं या fruits हैं, flowering plants हैं, they need bees, wasp, beetles and flies for again successful harvest. तो pollination के लिए 75% food crops require them. So they are very important agent or drivers. So India में 4 indigenous honeybee species है. Their names are important for us. Total India में 700 bee species है. उसमें से 4 indigenous है: Asiatic honeybee, giant rock bee, dwarf honey bee and stingless bee. So जो western honeybees हैं in western countries, they were introduced in India 1983 में again to increase the honey yield in India. So we need more focus, more research and development, more surveillance, because India again, we do not have proper data in terms of India में क्या hotspots हैं. जैसे महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, they used to produce 8 to 10 tons of forest honey, but now again they are struggling even a ton. तो that is important कि जो impact है of diseases, to minimize that transmission, more research and development is needed. So here artificial neural networks is being talked about. 3 components होते हैं: nodes, edges और weights. तीनों का अपना important significant role है. जो nodes हैं they mimic the learning of जो nodes हैं they behave like the neurons. जो अगर हम अपने न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं इन द ह्यूमन बॉडी, तो नोड्स एक्ट लाइक, पिक्चर में देख सकते हो जो सर्कुलर डॉट्स हैं, एक तरीके से सर्कल्स है, दीज आर द नोड्स. दे एक्ट एज न्यूरॉन्स. तो सिंगल कंप्यूटर्स दैट एक्सेप्ट एंड इनपुट सिग्नल्स, मैनिपुलेट देम इन सम वे एंड देन डिलीवर द आउटपुट. और जो एजेस हैं, यू कैन सी द स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर जॉइनिंग द नोड्स, दे देन मिमिक लाइक सिनेप्सेस जो हमारे न्यूरॉन में होता है. एंड जो वेट है, that denotes the strength of the edge. तो जितना ज्यादा weight होगा उतना stronger वो signal transmit हो पाता है along the edge. And this picture you can see is from Indonesia, floating solar power plant. So you can see that the progress or the developments even in the countries of global south. So Nusantara power project है West Java province में.
So यहाँ गोवा की बात हो रही है, and the behavior of tourist is how that is being changing, or how insensitive that is. So it is being talked about how much disrespectful it is for the local Goans, or जो Goan culture है, कि the tourist, they are only concerned about कि they want to click pictures or they want to make reels, but their sensitization becomes very important even from the perspective of sustainable tourism. So they want to just enjoy alcohol publicly, play music, dance in the open. So that is the tourism for them. That is the meaning of tourism for them. So that needs to be reformed. Artificial intelligence and its role in transforming the governance. So we see that India is the fifth largest country. We aspire to be again the developed country by 2047. So role of artificial intelligence is going to play very important role. जैसे यहाँ पे Gov AI की बात हो रही है, GOV AI. सो इंडिया में जो पेस ऑफ डिजिटाइजेशन हुआ, या जो इफ वी टॉक अबाउट द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ द सिटीजंस, बिकॉज दैट वुड बी इंक्रीजिंग विद टाइम. सो जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गवर्नेंस की उसको और सिंप्लीफाई करने में role of AI becomes very important. Fintechs are also rising, cyber crimes are also happening. So safety maybe they can play the role. So जो बोलते हैं maximum governance, minimum government, that principle or that vision can be achieved through it. So it is stated कि AI जो एक तरीके से kinetic enabler है for the next wave of reimagining our governance. And also India is the current chair of the Global Partnership of AI, Artificial Intelligence. So it has led the move to ensure trusted partnerships. They play a lead role in shaping the future of technology. Plus, ethical usage is going to be important going forward with its usage. Why Germany is headed for the snap polls? So it is being stated जो current coalition government है Germany में came into power 2021. So it is one of the most ineffective coalitions so far the country has seen. So जब डेट लिमिट्स या डेट सीलिंग्स की बात की जाती है, तो जर्मनी का डेट ब्रेक रूल लिमिट्स यूरोपियन यूनियन कंट्रीज बोरोइंग टू 0.35% ऑफ द जीडीपी. सो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा हुआ है. So government has to try to balance its book every fiscal year. So we are seeing कि the incumbent government has not been so successful in managing the things. So leader of opposition जो अभी currently we see Frederick Merz, so he's seen to be one of the strongest players right now. Industrial Revolution 4.0 और बेसिकली वो पिछले वाला करो एक बार. यहाँ बोल रहे हैं कि डेट रूल के साथ साथ और भी एस्पेक्ट था. फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कि व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड हो गया, या फिर क्लाइमेट चेंज में कैसे डील कर सकते हैं. हर एक चीज में उनका एक सहमति नहीं हो पाया. रूलिंग कोलिशन से इट हैज बीन इनइफेक्टिव कोलिशन सिंस 2021. हर एक एस्पेक्ट में, डिफेंस पे, एनर्जी स्पेंडिंग पर, यूक्रेन पर. इसलिए इट गॉट. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 एक एग्जाम्पल है, जॉइंट वेंचर का हम बोल सकते हैं between again कोरिया और एनसीईआरटी. सो टीवीईटी मैकाट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट की बात हो रही है, स्ट्रेंथनिंग कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ इवन वुमेन सोशल एंटरप्रेन्योर्स. सो एन इंक्लूजन ऑफ अगेन यूथ इज इम्पोर्टेंट. बाकी डायस्पोरा की बात हो रही है कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन. सो उस एरिया में वी आर सीइंग दिस थिंग. तो मोर creation of job opportunities for women, the MSMEs में भी help करेगा. Development Corporation आंध्र प्रदेश Sector Skill Development Corporation. So you see this is a multilateral effort. So international and the global standards को हम कैसे promote कर सकते हैं? This is one of the ways. So सारना कोड की बात हो रही है. झारखंड state is again going to see elections. So इसमें ऐसा हुआ था कि झारखंड, हाँ, जो नेचर वर्शिप जो ट्राइबल्स हैं वो बोलते हैं कि हमारा रिलीजन है. सारना कोड को दे स्टेट की हमें एक डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी की तरह आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए जो नेक्स्ट सेंसस होने वाला है. तो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, तो पीपल आर डिमांडेड कि हमारी जो रिकग्निशन है वो नहीं हो पाती है. जो अभी करंट जो भी प्रोसीजर है, मेथड फॉलो किया जाता है, आइडेंटिटी इज नॉट दैट इज, मतलब वो आइडेंटिफाई नहीं किए जाते, तो दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम्स ऑल्सो.
सो ऑल्सो उनका मानना ये है कि सारना कोड जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फेथ. सो कौशिक यू कैन ऐड अप टू दिस. हाँ मतलब दे आर बेस्ड ऑन नेचर वर्शिप, और उनका अपना एक रूल्स रेगुलेशन कस्टम रहता है, और दे से कि दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदुइज्म इन वेरियस अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल अभी जब बात हो रहा है कि सिविल कोड इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो बोलते हैं कि उनका जो वेज ऑफ लाइफ है वो थोड़ा डिफरेंट है, दैट इज वाई दे आर डिमांडिंग सारना फॉर ट्राइबल, चाहे वो SC ST कोई भी रहे। Hmm. And the tribes in Jharkhand are Oran, Munda, Santal. So these are the tribes that are there in Jharkhand. Or they make tribal जो है they make India's 8.8% of the total population. So सिर्फ इन स्टेट में we see कि कहाँ पे scheduled tribes हैं. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में. बाकी नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय. तो असम में नहीं है. नहीं है असम में भी थोड़ा सभी जगह है. होंगे, बस दो जगह नहीं है इन मोस्टली, एक इनमें पंजाब और ज्यादा हरियाणा। है. यहाँ नहीं है बस. लद्दाख, पंजाब हरियाणा, हाँ। पंजाब और हरियाणा और यूटी ऑफ दिल्ली. वहां पर भी है लेकिन बहुत कम परसेंटेज में, 0.1 से 1 से। हाँ हाईलाइटेड नहीं है. ओके. So importance of again vocational education, music, dance, and drama are integral to child's holistic development. So it is clearly stated music जो है fosters calmness and mental growth. Hobbies जो हैं children को creative freedom allow करते हैं. तो rote education only limiting making education limited to books is not going to serve the purpose. Yeah, even that is going to impact the development of human resource somewhere. So dance just it is proven to increase the overall joy. It makes it more interesting. So that is why जो grasping power है that also increases. You get to learn new perspectives. You get to engage in a different way and learn in a different way. So it nurtures empathy, creativity, public speaking skills, which are actually needed when you become a part or you want to be a part of the labor force. These are the skills which are also looked into as a part of, again, the overall personality of the demography. Then similarly, bagless days encourage students to have a relaxed approach to learning. So इस sense में बोल रहे कि bagless days, but again promoting this relaxed approach in other way also कि you don't have to take the pressure. जैसे यहाँ हमने पहले भी बात करी in the context की जो entrance exams होते हैं वहाँ पे एक तरीके से किस तरीके से pressure होता है कि you have to score well. वो ही determine करता है आपका success या failure. तो that is wrong. That needs to change. So skilling needs pilot projects. So National Education Policy 2020, its implementation is important. And like logistical challenges of बात हो रही है इधर. But overall, nearly like 85% of Indian schools lacking vocational courses. 85%. So we need to bridge this gap. Allocation of funds भी चाहिए, infrastructural development चाहिए, capacity building चाहिए, more partnerships चाहिए, digital and modern technology चाहिए, तो उसके लिए और funds are needed. How Delhi is easing the flood pain bit by bit. So encroachments are being cleared. So floodplains again they're more susceptible to the floods, and again because that is closer to the bank of river Yamuna. So construction is not allowed. Jo CRZ norms that needs to be followed. Role of NGT is very important here again as an environment regulator. So even like projects taken up by DD on the floodplains for development of river fronts, eco parks बनाए जा रहे हैं, wetland safeguard and again rejuvenation is important. So preventive measures के लिए we using drones, aerial mapping की जा रही है of the floodplains, and satellite imagery are also being used to track the developments जैसे new JJ clusters जो बनाए गए, security guards to deploy to provide protection, monitor the land. So encroachment एक बहुत बड़ा problem था जब recent floods भी हुए थे, तो then also we saw एक्चुअली तभी आइडेंटिफाई किया गया और एक्नॉलेज किया गया इट्स अ बिग प्रॉब्लम. अर्बन प्लानिंग, सो स्मार्ट सिटीज डेवलपमेंट में जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली कोस्टल एरियाज में या अलोंग द रिवर बैंक्स, इट नीड्स टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट.
कि दैट इज सेफ गार्डेड. सो जैसे मास्टर प्लान 2020-2041 की बात हो रही है. सो इन्वायरमेंट एम्पावरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड सस्टेनेबल प्लान इज इम्पोर्टेंट. चाहे बिल्डिंग डिजाइन्स की हम बात करते हो, तो इवन अदर एरियाज जो विच आर नॉट क्लोजर टू द रिवर बैंक्स, उनका क्या इम्पैक्ट होगा इन्वायरमेंट के ऊपर, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंक्रोचमेंट फ्री एंड दैट इज इम्पोर्टेंट एरिया. तो ओखला फिजाबाद जो होगा भाई एरिया से. तो ग्लोबलर्स इंडिया टेस्ट इट्स फर्स्ट hypersonic missile and seen to be a game changer. So because India enters into this elite club, so इसकी range जो है 1500 kilometers है, successfully tested from Dr. APJ Abdul Kalam Island off the coast of Odisha, and speed is Mach 6. So it is like 6 times the speed of sound, I think, ना. Mach 6 या Mach 2 होता, तो it is the multiple of that. So we हाँ became again ठीक है पार्ट ऑफ दिस एलीट ग्रुप जो बात. सुपरसोनिक होता है उसके बाद हाइपरसोनिक होता हम्म चाइना, रशिया एंड यूएस who've developed and deployed the hypersonic weapons. So India also enters this group. So you can see in the picture है. also. स्क्रैम जेट इंपॉर्टेंट है, रैम जेट ना स्क्रैम जेट. Hmm. कोई मूविंग पार्ट नहीं होता स्क्रैम जेट के अंदर में. द एयर दैट इज मीन सक्ड इन while moving, it is used as a combustion along with the fuel. इसको स्क्रैम जेट बोलते हैं. It glides along the path. Hmm. इसलिए HST होगी. Hypersonic technology demonstrator vehicle. हाँ. It was used. So again, achieving or effectively how we can achieve Make in India goal या सेल्फ सफिशिएंसी और बूस्ट कैसे की जाए. तो एक यहाँ पे ये प्रपोज किया जा रहा है, रिकमेंड किया जा रहा है, वी शुड रिफॉर्म जो इम्पोर्ट टैरिफ्स हैं. जैसे जीएसटी केस में भी टॉक अबाउट द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जो रॉ मटेरियल्स हैं दे आर taxed higher compared to the imports of the finished goods. So India's manufacturing sector, it is struggling to exceed 17% of the GDP. We target कि 25% of the GDP target हमें achieve करना है as a share of manufacturing sector. The past 20 years, it is stagnant around 17 or 16% of the GDP. So even our finance minister, she in the budget speech announced comprehensive customs tariff review होना चाहिए कि क्या हम टैरिफ्स इम्पोज कर रहे हो उसमें रिडक्शन होना चाहिए या कुछ इंक्रीज होना चाहिए. जैसे डिफरेंट सेक्टर्स पे भी वी नीड टू डेल्व इनटू दिस. टेक्सटाइल्स में अगर हम बात कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो 52% जो हमारा टोटल इम्पोर्ट्स आई थिंक वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. एंड केमिकल सेक्टर इज देयर. सो मेटल्स हैं. सो tax tariff reforms to resolve the duty inversions can arrest the cost competitiveness leak of Indian manufacturing. So competitiveness के perspective से everything is looked into, even when it comes to joining the free trade agreements also. जैसे RCEP की बात होती है तो competitiveness is very important. That needs to be protected also. उसको promote करने के लिए भी we have to impose them. So seize this reform opportunity. India needs to thoroughly evaluate the duty structures. Cost disadvantage है तो that needs to be resolved. Uniformity in assessment होना चाहिए. So India's tough textile challenge beyond cotton. तो इंडिया मार्जिनल प्लेयर है इन द फास्ट ग्रोइंग एमएमएफ जो मैन मेड फाइबर्स टेक्सटाइल मार्केट है. एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था, इंडिया का एमएमएफ बेस्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स अकाउंटेड फॉर ओनली 14% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स जो इंडिया में होते हैं. एंड ऐसा क्यों? क्योंकि एडवांस टेक्सटाइल्स जो है इट कॉल्स फॉर इनोवेटिव या इनोवेशन बेस्ड अप्रोच. और जो हमारा एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर स्किल्स हैं या फिर जो टैलेंट है दे आर यूज्ड टू एन एफिशिएंसी बेस्ड अप्रोच. So MMF players, they suffer from lack of good quality raw material. So government is working to make sector competitive. So National Technical Textiles Mission launched PLI scheme hai for fabric, apparel and technical textiles has been unveiled. तो technical textiles भी बहुत important है. So let's see कि again जो different schemes announce की गई हैं या PM मित्रा की भी बात करते हैं.
क्या उनका रोल रहेगा। तो इफेक्टिव मॉनिटरिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो delving more into this, अगर रॉ मटेरियल कॉन्ड्रम की हम बात करते हैं, बॉटलनेक्स, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पॉलिस्टर का और विस्कोर्स का, जो सिंथेटिक फाइबर्स है। बट एमएमएफ में हमें कैपेसिटी डेवलपमेंट की और जरूरत है। सो वी सी दी जो ग्लोबल प्लेयर्स है, चाइना, ताइवान, वियतनाम, they have or they enjoy the versatility that they have, they are more competitive. So India की polyester industry भी very, it is domestically focused and prices भी lower हैं। So quality of raw materials improve करने के लिए again quality control audits, जो regulatory standards ensure करते, they are complied with that, उनका role important है। Bureau of Indian Standards certification is important। जो importers की अगर हम बात करें, so good quality polyester filament yarn is essential to crack the export market। तो यहाँ पे भी चाइना की वजह से मेन चैलेंज देखने को मिल रहा है। मेक इन चाइना पॉलिसी जो है, दैट इज मेकिंग थिंग्स वर्स या फिर और चैलेंजिंग इंडिया की टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। सो कॉटन टेक्सटाइल से अगर हम कंपेयर करते हैं, यू कैन सी कितना ज्यादा डिफरेंस है। जो देयर इज ह्यूज शेयर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल सेक्टर इन इंडिया। So consumers across the world have moved on from cotton to man-made fibers. So man-made fibers का share 74% हो चुका है. Cotton is now limited to only 20%. So that is also, even cotton sector will face challenges in terms of exports and their external demand. So role of women, MSMEs बहुत important है। Even जब हम weaving की भी बात करते हैं, तो That's role of women is important, skilling them। या हम यहाँ पे भी ये भी बात करते हैं, creating all women industries। So that is a possibility here in the textile sector। So इंडिया में different hubs है, जैसे Pondicherry is there। So डब्बा trading in vogue again, draws rupees 100 lakh crores in one day। तो डब्बा ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे गैम्बलिंग बोल सकते हैं इसको हम, गैम्बलिंग ऑन स्टॉक प्राइसेस। कि आप बाहर से ही ग्रुप ऑफ पीपल है, आप गैम्बल करते हो, आप बेट लगाते हो कि इस शेयर का प्राइस इतना ऊपर जाएगा या इतना नीचे जाएगा, ऑन दैट बेसिस आप ये इस तरीके से गैम्बलिंग या इलीगल ट्रेड करते हो। तो बिकॉज ऑफिशियली जब आप कर रहे हो अगर ट्रेड, तो उसमें वी हैव सीन की लॉसेस 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हैं दे आर सफरिंग। तो ये एक ऑफेंस है अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। 10 साल की सजा हो सकती है, 25 crores ऑफ फाइन। एंड exchanges have been warning investors to stay away from such type of acts। सो अभी जो और स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेके आए गए, दैट इज वाई वी आर सीइंग कि डब्बा ट्रेडिंग इज ऑन द राइज। सो मार्जिन कम हो गया, रिक्वायरमेंट्स फॉर्मल पेपर आपको चाहिए, लोअर लॉट साइज हमने रिड्यूस कर दिए, जो पर्टिकुलरली फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट की हम बात कर रहे हैं, तो वो इसीलिए किया गया ताकि जो इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन हम देख रहे थे, बिकॉज ऑफ द ईज विद विच यू कैन ओपन अप योर डीमैट अकाउंट एंड इतनी सारी एप्स हैं, so that had to be curbed because of the losses that people were making, and still they were not like reducing the trade again in that greed of making profits in a very less time। Multilateral development bank reforms, bridging digital gap, जो G20 summit हो रहा है in Brazil, these are the top agendas। So the grouping constitutes 88% of the world GDP, 78% global trade, likely to report progress in achieving the SDGs। So ये हम हमेशा बात करते हुए आए हैं कि G20 as an again alternative to UN, because जो हम UN reforms की बात करते हैं still pending and no actions are seen to be visible in terms of implementing or even talking about those reforms। So it's important leaders of 19 member countries will be there, and proposal calls for MDB reform, shift the focus from individual projects to programs where national governments take stronger lead. So more multilateralism, including the interests of again the developing countries or the global south। Main जो agendas again dealing with the climate change,
yesterday also we covered the role of G20 is important because so far we are not seeing any kind of agreement or progress in COP29. The energy transition in again चाहे एनर्जी ट्रांजिशन हो या क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन गोल्स हो एनडीसी गोल्स हो सब में हमें फाइनेंस चाहिए. The fiscal cost of PDS leakage seen at rupees 69,000 crores in a year. तो जो लीकेज है इन पर्टिकुलरली पीडीएस की बात हो रही है. सो मेजर्स जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं लाइक पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, आधार इनेबल्ड बेनिफिशरीज जो है या फिर benefits दिए जा रहे हैं in terms of the food grain that is happening through Aadhaar IDs, and then we are GPS tracking of the vehicle, the motor vehicles. So under the National Food Security Act या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की हम बात करते हैं तो 800 million beneficiaries हैं under the free ration scheme. So but challenge ये fiscal लीकेज जो हो रहा है उसको और हम कैसे कर सकते हैं. तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की एक बात की जाती है एंड consider the economic cost of rice and wheat for that year. So 69,000 crores in the financial year 2022-23 देखा गया. So इसको और हमें अलाइन करने की जरूरत है. So more targeted approach, end-to-end computerization of PDS program is needed to reduce the leakage. जैसे अरुणाचल प्रदेश followed by Nagaland, Gujarat, they are the top 3 states in terms of PDS leakage in the grains. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही ज्यादा लीकेज की देखी जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. बिहार में वो ड्रॉप हो गई फ्रॉम 68% टू 19% जो लीकेज की बात कर रहे हैं. तो डिफरेंट स्टेट्स में अगेन यूनिफॉर्मली नहीं इम्प्लीमेंट किया गया जो रिफॉर्म्स था. Joining RCEP will hurt India more than China Free Trade Agreement. This is stated by GTRI Global Trade Research Initiative. ये बोल रहा है कि अगर इंडिया RCEP ज्वाइन करता है तो वो इंडिया को ज्यादा हर्ट करेगा instead of thinking about free trade agreement with China. So barring China and New Zealand, India has free trade agreements with the 13 out of the 15 members हैं RCEP के. So that is one thing. And यहाँ पे हम अगेन यही क्वेश्चन रेज करते हैं द रेलेवेंस ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर इंडिया बिकॉज जो पास में हमने जापान के साथ साइन किया, साउथ कोरिया के साथ साइन किया, इंडिया साइन किया, वी हैव नॉट बीन एबल टू लेवरेज जो बेनिफिट है ऑफ इंक्रीज मार्केट एक्सेस या इंडिया के फेवर में ट्रेड स्टिल भी नहीं हुआ उसके बाद भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भी हैव कंसर्न्स रिलेटेड टू रूल्स ऑफ ओरिजिन एंड देन द चीपर इम्पोर्ट्स बिकॉज फ्री ट्रेड होगा तो चीपर इम्पोर्ट्स जो होंगे वो agreement के बाद we'll have to import. तो how that will impact the competitiveness of the domestic industries because still India की हम जो industrial sector उस पर अब focus करने लगे हैं. तो already China के साथ we have the large trade deficit. So ये कुछ areas of concerns हमारे लिए. तो इंश्योरेंस मार्केट की अगर हम बात करते हैं the reforms, so you can see कि इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लेवल इज ओनली 4% कंपेयर टू अमेरिका में 116% and 10.5% UK. So local insurance players, they are now confident of their ability to raise capital और जो design products है. Regulation by the Insurance Regulatory and Development Authority of India is important. Insurance sector का जो compound annual growth rate है that is also seen to be increasing according to again McKinsey report. 17% जो है that is increasing. So यहाँ पे more transparency चाहिए. Again insurance sector में एक और challenge जो सबसे बड़ा challenge जो moral hazard का है या adverse selection का है कि जो insurance policy buy कर रहा है that is better aware about कि कितना possibility है of the for example health insurance है तो that person is better aware about his or her own health instead of the insurance company. तो उसको moral hazard बोलते हैं, adverse selection बोलते हैं on the part of the insurance company. So transparency is important यहाँ पे again ability to raise fund because capital market में you can get listed also. So एक वो increase opportunity या फिर एक opportunity है because of which this is being resolved या it is no longer such a big challenge for the insurance companies. तो इंडिया में
जो जनरल स्टेक इन फ्यूचर जनरली लाइफ इंश्योरेंस है, जो LIC है सबसे बड़ा शेयर उसका है, तो FDI 100% अलाउ करना, दैट वाज आल्सो रिसेंटली प्रपोज्ड। तो जॉइंट वेंचर्स अलाउ किया गया, इंश्योरेंस दे हैव 74% स्टेक एज ऑफ नाउ। So NCQG, the talking point at COP29, so new collective quantified goal resulted in a stalemate. So 2025, the deadline to finalize these NCQG according to the Paris Agreement 2015. And if that is signed, so the governments are required to report every 5 years on the NDCs. So, since 2015 हो ही रहा है, and बट यहाँ पे भी यूनिफॉर्म ट्रेंड हमें नहीं देखने को मिल रहा है, तो मेजर चैलेंज अगेन क्लाइमेट फाइनेंस पे ही आके बात रुकती है। $1.1 ट्रिलियन जो है मिनिमम एस्टिमेटेड अमाउंट नीडेड है बाय द डेवलपिंग कंट्रीज टू मीट 2030 डेडलाइन, और अगर मीट नहीं किया जाएगा तो ये अमाउंट भी इंक्रीज होता जाएगा। So challenging क्यों है? Any aspect of the Paris Agreement faces challenge because most prominent one is that there is no specification कि कितना कंट्री कितना कंट्रीब्यूट करेगी, या नेशनली भी डिफरेंट कंट्रीज को जो कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, और कितना कंट्री को रिसीव होगा अमाउंट वहाँ पे भी क्लैरिटी नहीं हो पाई है, तो इसलिए NCQG पे हम डायरेक्टली कैसे अग्रीमेंट देख सकते हैं। So we need more clarity here. So data, if data is not there with us, क्योंकि सब कंट्रीज का हमें चाहिए। So InvITs help hedge the market volatility, तो they play the role of hedging। जो हम मोस्ट ऑफन गोल्ड की बात करते हैं, तो InvITs या जो इवन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट हैं, they are also used as a hedge instrument by the investors and the traders. So returns have low correlation with the stock market movements. So पहला डाइवर्सिफिकेशन की बात है, इनविट्स प्रोवाइड यू वे टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो बिफोर बियॉन्ड अगेन जो ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस हैं, जो शेयर्स हैं या फिक्स्ड इनकम या जो गोल्ड एसेट है, दैट्स वन अ पॉजिटिव। और डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस द रिस्क ऑल्सो, लिक्विडिटी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है, देयर इज मोर ईज, मोर डिजिटाइजेशन एंड द ईजियर वे ऑफ अगेन इन्वेस्टिंग इन इनविट्स। That's another advantage. Tax efficiency, it offers you certain tax advantages, like which again attracts more of the investors. So income distributed by InvITs is generally mix of dividend होता है, interest भी आपको मिलता है, capital gains भी होता है, और जो taxation benefits है वो भी exist करते हैं। So InvITs are often tax exempt in the hands of the investor, provided जो certain conditions that they are met. And the capital gains is subject to the long-term tax rates if it is held for more than 1 year. एंड जो स्मार्ट पोर्टफोलियो एडिशन में है उसमें भी इनविट्स का इम्पोर्टेंस इंक्रीज हुआ है। सो चाहे लिक्विडिटी हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, ईज हो, टैक्स एफिशिएंसी हो, उनका पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ और रिटर्न्स हो, दैट इज इन फेवर ऑफ द इन्वेस्टर। So stop the ambivalence. G20 under India's presidency watched for cryptocurrency regulation, but still उसके बाद we haven't seen any progress so far on this. अभी हमने देखा recently when the Trump या फिर जो US presidential elections के result आए उसके बाद Bitcoin it has hit an all-time high of $93,000. Within it was only 1 week कि it somewhere gained around ten to $15,000 in just 1 week. So it showcases कि कितना ज़्यादा volatility है, उसके साथ कितना risk associated है, and the major we are seeing the participation also increasing in the crypto market. So that is why regulation becomes important. RBI has opposed the cryptocurrencies acceptance as even a legal tender. So RBI imposed a ban on banking support for the crypto transactions. So banks cannot support them. And SEBI का रोल भी अगर हम बात करते हैं तो SEBI has put forward the idea of regulating the cryptos. तो एडवांटेज क्या है क्रिप्टोज का? एनोनिमिटी है, टोकनाइजेशन है, इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई वी आल्सो सी दैट दिस इज मिसयूज्ड आल्सो।
सो क्रिप्टो करेंसीज में अगर हम इन्वेस्टर्स की प्रोफाइल देखें, और 75% जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर बिटवीन 18 to 35 ईयर्स ऑफ एज। सो यही वो एज ग्रुप है जो हम देखते हैं कि इवन डेरिवेटिव मार्केट्स में भी ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो 90% ऑफ देम दे आर सफरिंग लॉसेस। सो इट इज लाइक विदाउट नॉलेज, विदाउट एनी गाइडेंस, यू आर जस्ट पुटिंग इन योर मनी, योर हार्ड अर्न मनी, एंड विच most often you end up losing. So that is why investors protection के लिए भी regulation of the crypto market is important. So Financial Stability Board is there in India, proposed by IMF also. So यहाँ पे भी global collaboration, global agreement होगा, then only things can move forward here. So coordinated and comprehensive regulatory framework is needed. Although India may we are imposing the income tax, 30% income tax on the returns, and again 1% TDS is being imposed, but वो on the part of extraction हो गया, और when you are exiting that, तो जब आप enter कर रहे हो या ease of जो investing increase हुई है उसको हम कैसे curb करेंगे? People they need to be made more aware about कि what are they going for and why are they going for it. So Indian roads are the most deadliest, and last week we saw it killed Dehradun road accident हुआ वो, so it was very dangerous. So stark reminder of Indian roads being the world's deadliest. If we see कि every year 1.5 lakh deaths are happening because of road accidents में, only 5 lakh road accidents होते हैं इंडिया में, 2 लाख इंजरीज होती है, तो हाईएस्ट फर्टैलिटी ग्लोबली इंडिया में देखी जाती है। डेंजरस टेरेन, यू कैन सी टॉप 10 कंट्रीज विद हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड फर्टैलिटीज 1,68,000। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ दिया हुआ है कि नेशनल हाईवे 2% है सिर्फ, लेकिन 30% ऑफ एक्सीडेंट है वो। इसलिए हम लोग नेशनल हाईवे को ज्यादा प्रूफ बनाएंगे विद रिगार्डिंग टू एक्सीडेंट प्रूफ, तब हो सकता है। Cost us 3% of the GDP loss also. Most vulnerable is two-wheeler riders, 44%, pedestrians at 20%. So pedestrian deaths in India in 2022 was more than the combined fatalities European Union or Japan में. So how to fix the problem? Rectify the dark spots, identify करना, and highways पे major reason वही होता है. Then government has spent over 50,000 crores on this. So highways they have passenger speed regulation important है. Cameras install किए जा रहे, speed cameras, traffic chalans issue किए जा और अर्बनाइजेशन में साइड वॉक पर फोकस नहीं करता है, रहे. तो साइड वॉक भी करना जरूरी है। और इशूइंग ड्राइविंग लाइसेंसेस बीइंग अपग्रेडेड, तो उसको भी इतना इजीली अवेलेबल नहीं किया जाना चाहिए. So TV shows OTT viewership surges is catch-up content that catches on. So digital is steadily gaining larger share viewership. So that is why regulation of OTT platforms, what content is being showed, जैसे Sony Live, Disney plus Hotstar deal हुई, monopolizing tendencies नहीं increase होने चाहिए. So regulating it becomes very important. The prices that are being charged, that needs to be regulated. And even through this जो ads हैं, that also surrogate ads इसके through नहीं promote होनी चाहिए. Lab grown meat and dairy may come under the Food Safety Standards Authority of India's regulation. So, to frame the standards for the lab grown proteins, despite doubts over its acceptance, because यहाँ पे भी यही है, जैसे हम genetic engineering genetically modified seeds की बात करते हैं कि lab grown meat human consumption के लिए कितना safe होने वाला है, will it lead to any disease, या जो हमारी immunity है how it will impact on that, या जो again for example if there is any disease, so how quickly it will be evolving, या जो genetic mutations होता है, या even how it will somewhere impact all of that, तो that is the major concern. तो इसलिए बोल रहा है कि उसको acceptance का एक element है. तो people for the animals public policy foundation they sought
the regulations by FSSAI. Regulations will allow real milk and meat products, they can be marketed. And also ये कैसे impact करेगा on the livestock sector also, जो the people who are dependent upon it as their livelihood, because ये ज़्यादा cheap होगा तो market demand इसके लिए भी increase ज़्यादा हो सकती है इंडिया में. So India is home to more than 15 companies who are focusing upon cultivated meat. So startups are also there. So regulation becomes very important with the increased participation and the safety. So Center for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad. Their role is also important. So sale in Singapore and other places. Advantage of this meat is they can eat the real meat free. It exactly like tastes like that or looks like that. पर थोड़ा सा सेफ होता है इन टर्म्स ऑफ जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसको डील करने में हेल्प कर सकता है. ऑल्टरनेटिव प्रोटीन्स बोला जा रहा है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो है, रिस्क ऑफ जूनोटिक डिजीजेस कम हो जाते हैं. बट इसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा वो एक कंसर्न है हमारे लिए. एंड जो बिलियंस ऑफ एनिमल्स लाइव्स दे आर पुट टू स्टेक, दैट कैन बी सेव्ड. बट यहाँ पे जो अब डेवलपमेंट्स होंगी उस केस में बोला जा रहा है फ्यूचरिस्टिक दैट कुड सेव बिलियंस ऑफ. ठीक है वो ये. जनरली कि अगर लैब ग्रोन मीट है, पहली बार लैब ग्रोन है, तो बायोसिंथेसिस का बात हो रहा है यहाँ पर, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का बात हो रहा है, या फिर इसमें और भी हाँ जो भी प्रोटीन बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. हाँ, इंडस्ट्री. तो अब उसको यूज कर रहे हैं, तो क्या वो बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए यूज होगा, या फिर उसके अंदर में सिंथेटिक मटेरियल मिलाएंगे, केमिकल्स मिलाएंगे, तो इम्पैक्ट पड़ेगा ह्यूमन हेल्थ पर एज वेल एज ओवरऑल इन्वायरमेंट के ऊपर. दैट इज वाई उसको रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम फ्रॉम हेल्थ पर्सपेक्टिव. सिंगापुर में तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन क्या वो suitable है for the human consumption or not? So that's all for the day. Thank you so much for joining us on Ansarkari and stay tuned for further detailed sessions.